चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू किड्स स्कूल चैनल। हम इस क्लास में कर्सिव राइटिंग पढ़ना सीखेंगे, कैपिटल कर्सिव राइटिंग। स्टार्ट। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये है अपनी कर्सिव राइटिंग। चलो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे हमने लास्ट में कर्सिव राइटिंग मैंने आपको लिख के दिखा दिया है, अब मैं आपको उसको राइट करके दिखाती हूँ स्टेप टू स्टेप, कैसे आपको उसको सीखना है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ लेटर ए। कर्व, लाइन, वापस ऐसे और अंदर एक छोटा सा नॉड। ये क्या है? ए फॉर एप्पल। अगेन A for apple. Next, B for ball. Straight line, छोटा सा कर्व, अगेन एक कर्व. B for ball. Line. B for ball. Next, C for cat. कर्व और ये अंदर सी, अगेन कर्व और ऐसे सी। सी के बाद नेक्स्ट डी, स्ट्रेट लाइन, छोटी सी नॉड, कर्व लेके अंदर एक कर्व। डी फॉर डॉग, रिपीट, स्ट्रेट लाइन, फिर अंदर ऐसे नॉड, फिर ऐसे कर्व, फिर अंदर ऐसे लाइन। D for dog. Next, E for elephant. E for elephant. यहाँ से ऐसे कर्व, वन सर्कल, सेकंड सर्कल और ये कर्व। E for elephant. Next, F for fish. ऐसे नॉड लेके नीचे तक और अंदर स्लीपिंग लाइन। F for fish. अगेन ऐसे नॉड लेकर ऐसे अंदर थोड़ा सा कर्व और अंदर
स्लीपिंग लाइन. F for fish. Next G for goat. यहाँ से ऐसे कर्व लेंगे और यहाँ से रेड लाइन तक लेके जाएंगे इसको, फिर वापस ऊपर लेके जाके नीचे रेड लाइन तक टच करके ऊपर. G for goat. G for goat. Next H for hen. स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन और बीच में ऐसे नॉट. H for horse. स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन और बीच में ऐसे कर. तभी तक अपन ने A, B, C, D, E, F, G, H ये बनाना सीख लिया. अब अपन I for आइसक्रीम से स्टार्ट करेंगे. I for आइसक्रीम. स्टैंडिंग लाइन, कर्व और छोटा सा ट्रायंगल. I for आइसक्रीम. अगेन ट्रायंगल और ऐसे कर्व. I for आइसक्रीम. नेक्स्ट J for जोकर. ट्रायंगल, नीचे रेड लाइन तक जाएंगे और ऐसे कर्व. J for जोकर. अगेन J for जोकर. नेक्स्ट K for kite. सिंपल वाला K बनाएंगे, ऐसे कर्व्स, यहाँ पे भी ऐसे कर्व्स. K for kite. K for kite. Next L for lion. Straight line, nod. L for lion. ऐसे ऊपर से नॉड लेके जाएंगे ऐसे स्ट्रेट. L for lion. Next M for monkey. M for monkey. ऐसे कर्व, फिर 3 लाइन्स, कर्व. M for monkey. Next N for nest. Curve, straight line, curve. N for nest. N for nest. Next O for orange. Circle and a knot. सर्कल बनाएंगे और अंदर ऐसे गोला. O for orange. Next P for parrot. Straight line, उसका से कर्व और अंदर छोटा सा कर्व. P for parrot. Straight line, कर्व, अंदर से थोड़ा सा कर्व. P for parrot. फिर नेक्स्ट Q for queen. सर्कल एंड नीचे से नॉट. Q for queen. Q for queen. Next R for rabbit. Straight line, curve. से P for parrot बनाएंगे और नीचे line. R for rabbit. Straight line. R for rabbit. Next S for sun. S for sun. कैसे लिखेंगे इसको? सिंपल S बनाएंगे और ये S for sun. एक और बार S for sun. Next T for tiger. T for tiger. ऐसे कर्व, फिर ऐसे नॉड और ऐसे कर्व. T for tiger.
Next, U for umbrella. U for umbrella. Chord line with ऐसे एक knot. U for umbrella. Next, V for van. V for van. Next, W for watch. W for watch. W for watch. Next, X for Xmas tree. Curve. Another curve. X for Xmas tree. X for Xmas tree. Next, Y for yak. नीचे ब्लू लाइन तक लेके जाएंगे और उसको ऊपर टच. Y for yak. Y for yak. Next, Z for zebra. Z for zebra. Z for zebra. यहाँ तक अपनी कर्सिव राइटिंग खत्म हो गई है. अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.